Hello, ladies and gentlemen. This is ABP Live Podcast. Today, I'm in conversation with Suchetna Ray. She is the editor for Outlook Business. We'll be having a conversation around the budget जो आज हमारी finance minister ने पेश किया है. Firstly, how do you rate this budget on a scale of 1 to 5? How do you rate this budget? Let's start with that. Okay, this is Nirmala Sitharaman's seventh budget, and I'll give her a 4 out of 5. Okay, and why do you give a 4? I'm sure what the thoughts that are running in your mind, the objectives that are running in your mind are: it was a horribly boring budget. There were no big bang announcements. The markets gave her a thumbs down, and there has absolutely been no euphoria whatsoever. But you know why I'm giving her a 4 out of 5 is because Nirmala really had her job cut out, and she stuck to it. For a country which is growing at over 8% every year, and it is the fastest growing economy among the large economies of the world, you really don't have to do much. And for a finance minister to even understand that that person doesn't have to do much is a huge point to note. And Nirmala did exactly that. She steered clear of any sort of big bang announcements, populism, and just stuck to her core job. And that's why it's a 4 out of 5. And why that -1? -1 because I'm a journalist and I'm pessimistic by nature. And cynical also, so therefore. Okay. Let's start with the basics. She pointed out 9 basic points. Would you mind elaborating on what exactly are these 9 points and what has been the main structure of this entire financial budget? Right. So, see, as I told you, she had her job cut out, and by that, see, what has been the biggest criticism against her government? It has been jobless growth, and that is exactly why this budget scores as one of the top budgets that Nirmala has presented in the last 7 years. Why? Because she spent a lot of time, a lot of money, a lot of allocation on jobs. You'll hear phrases like employment linked incentive. For the manufacturing sector, there was an employment linked incentive for companies. So now she's actually walking the talk. Here she is creating jobs where she knows that it is on the government to ensure private sector is creating jobs by giving private sector enough money so that there is an incentive for private sector to hire you. That's a huge announcement in this budget, which I think so far has been to some extent underlooked. So that's one. Secondly, while we're growing again at 8.5%, and maybe that growth will reduce to say a 7%, as the economic survey told us yesterday, but that's also huge. So what she has to do is just ensure that she keeps her head down, ensures that the P&L account, the profit and loss account of the entire country that she deals with doesn't go out of whack. She did that also. Okay. See, हर बार जब भी बजट आता है, सबसे ज्यादा जो नजरें रहती हैं वो tax slab के ऊपर. This time it has been revamped, but not to a bigger extent. Would you mind elaborating on what really happened? Sure. So that's exactly why I'm giving her a 4 out of 5, because she didn't go overboard with it. Yeah, as you can understand, I am a great believer in subtlety, and Nirmala ma'am has just been very subtle, right? So she has given what many people might call tokenism, but she has managed to increase your standard deduction. पहले 50,000 की standard deduction थी, अभी 75,000 हो गई है. I understand that the criticism against her is that this is applicable only for those filing taxes under the new regime. But see, if the government wants to simplify the way you file taxes, they have made it very clear in the last 10 years also, they want you to move to the new tax regime. True. तो इसीलिए आपको न्यू टैक्स रेजिम में जाने के लिए आपको इंसेंटिव दिया जा रहा है कि आपका जो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 75,000 हो जाता है. दूसरी बात है कि आप और एक सेविंग करते हैं न्यू टैक्स रेजिम का. प्लीज यू शुड गो टू द वेबसाइट एंड चेक इट आउट. इट्स सो सिंपल टू फाइल दैट ऑल ऑफ अस विल नॉट नीड सीएस टू फाइल टैक्सेस एनीमोर. सो देयरफॉर उसमें भी तो आपकी बचत हो रही है ना. अब तो नहीं तो 5,000 रुपए ऐसे आप सीओ को दे देते हैं आपका टैक्स फाइलिंग के लिए. एंड यू नो दैट द एंड ऑफ दिस मंथ, व्हिच इज 31st July, is when you have to file returns. So the process has been further simplified. Third thing that she has done is she's tinkered with the slabs. And by the mere tinkering, as most news media houses are saying, that you'll be saving upwards of 17,000 rupees there as a salaried person. So therefore, उन्होंने कुछ ना करते हुए भी कुछ ना कुछ आम आदमी के लिए भी किया है.
So that is how the personal tax part stacks up. However, if you are in the markets, if you invest in the markets, and this is exactly why the market's given Nirmala a thumbs down, is because long-term capital gains, she has tinkered with that. That has gone up. Right. Even the short-term capital gains, that has also gone up. And on top of that, though minuscule, it's almost a 50% increase in the STT, the tax that the government will now charge on FNO. Okay. आपको याद रखना पड़ेगा. इन सबको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो फॉर ऑल दोज पीपल who may not know what is short term capital gain, what is long term capital gain, what is FNO. इन सब के लिए थोड़ा सा एकदम easy term में आप बस explain कर दो. Sure. So basically what she has done is, आप देखिए पिछले कुछ सालों में हम लोग देख रहे थे, there was a huge market euphoria, right? और सबसे ज्यादा प्रॉफिट आप बनाते हैं FNO से. But FNO की समझ कितने लोगों को है? आप अगर मुझे पूछोगे, मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाएगा आपको समझाने में. It means I also don't understand it very well. मतलब FNO for all those people जो सोच रहे हैं FNO क्या है? It's futures and options जो ट्रेडिंग करते हैं. Right, futures and options जो हमें किसी को ठीक से समझ में नहीं आता है, but हम लोग पैसे लगा देते हैं because we've seen the maximum returns around that. B, आपके पास कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म का फोन आ जाएगा जहां आप शेयर बाय सेल करते हैं, वो प्लेटफॉर्म आपको बताएगी कि आप FNO में पैसे लगाइए. That's exactly what she has done. She has taxed it minimally, but also to dissuade people like you and me who do not understand it so well. अगर आपको मार्केट की समझ है, बकायदा आप FNO में पैसे लगाएंगे, और आप जब पैसे लगाएंगे with the knowledge you know कि ये marginal tax है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आम आदमी के लिए this will also act as a deterrent. तो आप अगर फ्यूचर या ऑप्शन में पैसे लगाते हैं, फ्यूचर में आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, ऑप्शन में भी आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा. बेसिकली व्हेन यू कैश आउट, दिस इज द एक्स्ट्रा मनी दैट यू हैव टू पे इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्या होता है? वेरी सिंपल एग्जांपल. आपने कल अपना घर बेच दिया, आपके पास एक टाइम लिमिट होता है, जिस टाइम लिमिट के अंदर आपको टैक्स देनी पड़ती है सरकार को. मोस्ट पीपल डोंट थिंक दैट दिस इज वेरी अनफेयर कि मेरा घर है, मैंने बेचा, मुझे पैसे मिले, आपको मैं पैसे क्यों दूं, सरकार है तो. बट उसका उन्होंने बढ़ाया है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई मार्केट्स गिविंग हर अ थम्स डाउन फॉर इट. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स इज दैट आपने एक एसेट खरीदा, घर ही हो सकता है, उसको आपने बेच दिया इन लेस देन अ स्टिपुलेटेड टाइम. ये आपका शॉर्ट टर्म गेन है, एंड अ कैपिटल गेन एट दैट. उसके भी उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए हैं. ठीक है. So this is also a way in which I'm ensuring that if you are selling an asset, you're using that money to purchase another asset. अच्छा सुचेता, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. अगर फॉर एग्जांपल हम जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहे थे, मतलब हो सकता है कई लोग कंफ्यूज भी हो जाए. अगर फॉर एग्जांपल आपने 20 लाख का एक घर खरीदा, आपने उसको 2-3 साल रखा, रेंट पे दिया, जो भी किया, आपने उसको फिर 50 लाख में बेच दिया फॉर एग्जांपल, तो आपको कैपिटल गेन जो टैक्स देना पड़ेगा वो 30 लाख जो आपने एक्स्ट्रा कमाया उस पे देना पड़ेगा, 20 लाख. और वो भी आई गेस एक अमाउंट आता है जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके कुछ निकलता है, वो अमाउंट नहीं. अच्छा नहीं, आपको जो डिफरेंशियल अमाउंट है उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स देना पड़ेगा. बट उसमें जो आप यहाँ पे जो सुविधाएं हैं हमारे देश में, वो है कि यू स्टिल हैव 3 years टू एंश्योर दैट दिस मनी हैज बीन यू हैव स्पेंट इट ऑन बाइंग अनदर लॉन्ग टर्म. अगर आप वो कर लेते हो तो आपको कोई टैक्स देना पड़ेगा ना, नहीं. ठीक है. ये पहले कितना था, अब कितना हो गया? How has it changed, both the short term and capital long term? Both the taxes have been increased marginally. If you ask me the number offhand, I think it has gone up. One has gone up from 10 to 15%. The other has gone from 20 to 25%. But ये number एक बार मुझे check करना पड़ेगा. But the increase is just 5%. Okay, मतलब 5% भी है तो कई जगह 5% is मोटा मोटी 25%. 5% is also a sizable amount, because we are talking, if you talk about say houses in national capital or in any other metropolitan city of the country, then of course 5% is also a significant increase. मैं फिर से बता रही हूँ, that's exactly why आप देखेंगे markets ने आज निर्मला को cheer बिल्कुल नहीं किया है. This is precisely the reason. Okay. Now let's proceed to what all have been the investment. What do you exactly mean by investments really here? See, by investment, I mean like. Are you talking about schemes that she has announced? No, not only the schemes. Like for example, Bihar के लिए एक special package जाएगा for Andhra. Right. Yeah. Okay, so you are actually talking about the state packages that she has announced this time. Yes. Plus अब बहुत सारी जगह नए infrastructure पे भी investment होने वाला है इन सब. Of course.
उन्होंने जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट किया है, दैट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर दैट शी हैज announced this time, and that's a very large announcement that she has made, a very large allocation that she has kept in this budget. But again, mind you, beyond that big bang one corridor that she has announced, she has not, it's the Amritsar Gaya industrial corridor that she has announced, but beyond that, she has not made too many announcements about corridors. एक कॉरिडोर है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बड़ा सा जो है अमृतसर गया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसको छोड़ते आप अगर उसको छोड़ दो, then there are just few highways that she has announced, and the other big bang scheme that she has announced is the 3 crore houses for urban poor. But ये भी याद रखिएगा, this is again keeping with the core ethos of Vikshit Bharat, in which they have time and again said that their core focus would be on women, youth and India's poor. तो इसीलिए 3 करोड़ घरों के लिए उन्होंने एक स्कीम वो किया है, उन्होंने अनाउंस किया है. But the mastery of this budget is that ये सब अनाउंस करने के बावजूद उनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब जो वो पैसा खर्चेगी फ्रॉम द एक्सचेकर टू डू ऑल ऑफ दिस, has not increased as much as we have seen in the past few years. If my calculations are correct, for ensuring that she has money to make this infrastructure project, which is Amritsar Gaya industrial corridor, या तो ये जो highways उन्होंने announce किए हैं, या तो ये 3 करोड़ घर जो उन्होंने announce किए, सबको मिला के, and then there are sectoral allocations that you have to make as a finance minister, her capital expenditure is still a little over 11,000 crore rupees. 11 lakh crore rupees, I'm sorry, 11 lakh crore rupees, it's precisely 11.1 lakh crore rupees. वो इस बार एक्चुअली इंक्रीज है a little over 10% year on year. हर साल हम लोग जो इंक्रीज देखते आए हैं वो 24% होता है, कभी 35% हुआ है. इनफैक्ट पैंडेमिक के बाद वी अंडरस्टैंड पैंडेमिक वाज एन एबरेशन, उस टाइम तो वी सॉ द इंक्रीज बाय ओवर 40%. ओ बाप रे. Okay, Acha, what do you mean by urban poor? What exactly is the definition of the urban poor? So for that, we'll have to wait for the fine print to come in. But urban poor largely means the poor who are driven to the city from rural India. Okay, and they are dreaming of they have a dream of a house in a metro city in a urban city. And for them, तो बेसिकली देखिए ना, आप दो तरफ से देख सकते हैं. एक तो ये एजेंडा हमने वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में भी देखा है, जहां पे सरकार आपके लिए घर बनाती है, आपके लिए मतलब अर्बन पुअर के लिए जो रूरल छोड़ के अर्बन आते हैं, सिटी में आते हैं. दिस डज 2 things. One is that it takes care of the झुग्गी झोपड़ी जो आपको शहर में देखने को मिलता है. सरकार जब घर बनाती है वो देखने में अच्छा होगा, झुग्गी झोपड़ी नहीं होगा. Secondly, it also, as you said, goes a long way in meeting the aspirations of the poor who are looking at an upgrade of their lifestyle. Third, it serves another purpose, which is, देखिए इस बार बजट में और इकोनॉमिक सर्वे में दोनों जगह पे 2 statistics came out were very crucial. One is that we are seeing a job growth, but we are seeing a rise in rural job growth. जिस देश को डेवलप नेशन बनना है, वहां पे रूरल जॉब ग्रोथ की इंक्रीज उतनी मायने नहीं रखती है. You will not welcome rural job growth as much as you would welcome urban job growth. तो urban job growth के लिए ना आपके rural people will have to move to cities. This could be an incentive for them to move to cities. But सुचेता, अगर इसको सोच के देखा जाए, अर्बन एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा एक्चुअली अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट? सेकेंडली, अगर हर कोई सिटी में आ जाएगा, then गांव में I understand what you're getting at. Right, I understand what you're getting at. Now, therefore, to strike that balance, what she has done is to remember rural India's growth has been muted, but has been a very stable growth that we've seen for the past 10 years. Yep. Yeah, but it's been a stable growth. Where we've missed out, and that's exactly why the criticism against the BJP government has been jobless growth, is because the private sector has failed to create industrial jobs, blue-collar jobs, or white-collar jobs. And that is what she is trying to fix when she's announcing all these employment-linked schemes that she has done. Okay. Sounds like a plan. क्या और आपको लग रहा है? It does sound like a plan. क्या लग रहा है नया जो हुआ, जो आज तक के बजट्स में कभी देखने को नहीं मिला? Do you see something like that in this particular budget?
देखिए, इफ यू आस्क मी एज अ जर्नलिस्ट, द बिगेस्ट पॉइंट टू नोट वाज, आप अगर पिछले दिनों अखबार में सुर्खियों में देखा होगा, सब यही बोल रहे थे कि निर्मला सीतारमन और दिस इज मोदी 3.0, उनको अपने कोalition पार्टनर्स के लिए कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। द ब्यूटी ऑफ दिस बजट इज, हाँ, बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए पैकेजेस है, पर बिहार और आंध्र प्रदेश गोइंग इनटू द इलेक्शन रिजल्ट डे, व्हाट वर दे आस्किंग फॉर? दे वर आस्किंग फॉर स्पेशल स्टेटस। किसी को स्पेशल स्टेटस नहीं मिला है। उन्होंने सबके लिए कुछ दिया है, सबको खुश किया है, बट शी इज आल्सो इंश्योर्ड दैट हर फाइनेंसेस आर इन प्लेस। देखिए, मतलब She has मैं prayed इकोनॉमिस्ट actually, नहीं Abid। हूँ, मैं हाँ इकोनॉमिस्ट जी। नहीं हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से नहीं समझ पाऊंगा। बट स्पेशल स्टेटस का मतलब ये होता है कि आप स्पेशल स्टेटस का एक स्टैंप लगा देते हो, जिसका एंड रिजल्ट यही रहता है कि पैसा है। तो पैसा एग्जैक्टली, पैसा आए और खूब पैसा आए। देखिए, स्पेशल स्टेटस जब आंध्र प्रदेश मांग रही है, अब सोचिए आंध्र प्रदेश स्पेशल स्टेटस मांग रही है, देन दे वुड वांट कि कोई भी, सोचिए सरकार का नया प्रोजेक्ट है, एसीजेड हो सकता है, वो चाहेंगे कि क्योंकि मेरे पास स्पेशल स्टेटस हो, वो मेरे पास ऑन प्रायोरिटी आ जाए, आंध्र प्रदेश के पास प्रायोरिटी आ जाए। Then the problem that happens is there are many other states which will be clamoring for the same thing. That's one. Secondly, you take away the comparative advantage of states. Third, when you can't grant them these large projects, then you have to make do with higher subsidies, higher allocation, so on and so forth. ट्रू। अच्छा, तो ये निर्मला को करना नहीं पड़ा है। तो अगर आबिर, वी आर टू कंपेयर निर्मला एंड हर द वे शी इज हैंडल्ड द बजट, शी इज एक्चुअली प्लेड द रोल एक घर की बड़ी बहू जो करती है, सबको खुश रखती है, सबको कुछ ना कुछ देती है, पर किसी को सिंगल आउट करके बहुत कुछ नहीं दे देती है। मेक सेंस। अच्छा, एक मतलब इन जनरल आई वाज टॉकिंग टू पीपल इन माय ऑफिस, हम टीम में बात कर रहे थे, आजकल बजट देखने का ना इतना एक्साइटमेंट नहीं बचा है। मतलब यू बीन अ जर्नलिस्ट, यू बीन कवरिंग द बजट फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स, मोर देन अ डेकेड। अब जो एक एक्साइटमेंट था ना कि टीवी आप ऑन करके पूरे टाइम देखते हो कि अब ये बढ़ने वाला है, पेट्रोल इतना बढ़ेगा, ये कम होने का, वो सस्ता होगा, इसमें टैक्स कम होंगे, उसमें, आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स अ वेरी स्मॉल क्रिस्प बजट, बहुत छोटा आता है। व्हाई डू वी सी दैट काइंड ऑफ अ चेंज ओवर द इयर्स? जो पहले एक एक्साइटमेंट होता था कि कॉटन कम होने वाला है, ये इंडस्ट्री में इतने प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, 50 चीजें, आजकल वो सब कुछ नहीं होता है। I mean, I think that's the difference that I was talking about. That's exactly why I am giving Nirmala 4 out of 5. That is because gone are the days of massive populism. I've been covering budgets for the last now 2 decades. हाँ, मुझे अभी भी चिदम्बरम का 2008 का बजट याद है। वहां पे आई थिंक उस टाइम पे अगर कोई टीआरपी का मैच होता तो सारे टीवी चैनल्स दे वुड हैव स्कोर्ड ओवर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। चिदम्बरम ने एक झटके में उन्होंने देश के किसानों का कर्ज माफ कर दिया था। But that you have to remember, costs and bleeds the exchequer like nobody's business. True. And that is the mastery of Nirmala again. She has managed not to fall for the trap of big bang budgets. That's exactly big bang announcements. And that's exactly why I said in the very beginning कि euphoria कम हो गया है, क्योंकि big bang announcements नहीं है। I remember this is many years back when the chief economic advisor of this country used to be Raghuram Rajan. Raghuram Rajan, forget his controversies of the recent times, is a reputed and very well respected economist. He had spent a lot of time IMF before coming here. And उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया था, दिस इज इन द रन अप टू द बजट। बजट के पहले हम लोग जो पत्रकार हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, हमको 1.5 महीने पहले से फाइनेंस मिनिस्ट्री में एंट्री बंद हो जाती है, क्योंकि ये टाइम, इसे क्वारंटाइन टाइम कहते हैं, सो दैट द बजट इज नॉट लीक्ड। ओके, ये 1952 से एक ट्रेडिशन आ रहा है। द लास्ट टाइम a budget was leaked was way back in 1952 or 1954. After that in India, a budget has never got leaked, and that is because they ensure कि कोई अंदर ही ना जाए। क्वारंटाइन चलता है, जो ब्यूरोक्रेट्स भी अंदर जाते हैं, लॉट्स ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट दे हैव टू फॉलो। उनका फोन टैप होता है बकायदा, उनको पता है कि उनका क्या इनकमिंग कॉल्स है, आउटगोइंग कॉल्स है, सब कुछ मॉनिटर होता है, सो दैट नथिंग इज, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट एंड अ कंट्री सॉवरेनिटी एक्चुअली लाइज इन हाउ वेल यू प्रोटेक्ट अ डॉक्यूमेंट लाइक दिस। नाउ व्हाट Raghuram had said is, we were clamoring with him saying that अरे सर कुछ तो खबर बता दो, क्या करने वाले हो, वो क्या। So he said, अच्छा आप लोग यहाँ पे इंडिया में a lot of people aspire that our country should become a developed country like America. हम बोलते रहते हैं ना, यूएस की तरह बन जाए हमारी देश।
He's like, have you ever heard or do you know which is the date when the American budget is presented? None of us knew the answer. He said, you know why? Because the budget is like any other document that is presented in the parliament, and that is what defines a developed country. That stability बरकरार रहे, कोई नया अनाउंसमेंट नहीं होगा. अनाउंसमेंट के लिए इलेक्शन है. हमारे देश में इतने करोड़ों की जनता है जिनको आपको हमेशा कुछ ना कुछ आपको फ्रीबीज देना पड़ेगा, नहीं तो इलेक्शन आप जीतेंगे नहीं. But budget should not be used for populism. In fact, in the US, he showed us a budget. It's just a one-paper thing, which is filed in the night. There is a press release, and people write about it, and that's that. Wow, that's a utopia. I guess we all are looking forward to. कब आएगा वो दिन? ऐसा कुछ इंडिया में होगा. But for now, I guess सब कोई बजट वाले दिन एटलीस्ट टीवी सेट से अब डिजिटल एरा थोड़ा इवॉल्व हो रहा है तो उससे एकदम हुक्ड ऑन रहते हैं कि क्या होने वाला है, क्या चेंजेस होने वाला है. आई वाज स्लाइटली डिसहार्टेंड टू नॉट सी ऑल दीज प्राइस हाइक्स दिस एंड दैट एंड ऑल काइंड ऑफ मीटर्स हियर एंड देयर. बट हाँ, गोल्ड थोड़ा बहुत सस्ता हुआ है, which I'm really happy because for a lot of middle class Indians, gold a very important piece of asset, and they can actually Right. buy that. Are there any specific things you want to highlight here, which I may have missed asking you? I think more or less for Aam Aadmi, there is a lot of things in this budget. We should pay special attention to what Nirmala has announced in the form of the employment-linked incentive. This will go a very long way in now prodding the private sector to create jobs. And when they create jobs, these will be industrial jobs. These will be also high-end jobs, for which we've been losing out talent to foreign countries for a very long time. Secondly, she has also launched something called the Prime Minister's Internship Scheme. It's a one-year internship scheme. और जो हमारे देश में पहले नहीं होता था, now that she's announcing a scheme and putting the onus on the private sector, she's ensuring that they will get the money from the sarkar. And they'll be getting internship in like big companies, right? That's what I have actually. Yeah, so what she has said is that if you're a listed company and you give internship or you are developing a skill for these interns, then the money can be shown as CSR. That's a huge thing. And that can be deducted from tax. Yes, exactly. Yeah, that's a deduction that you make from your bottom line. Yes. So therefore, that's a big step that she has taken. Now, there is a lot of criticism around that also. You must have heard opposition members, especially Jairam Ramesh, already jumping, and P. Chidambaram, former finance minister, already jumping up and saying कि ये already कांग्रेस की मैनिफेस्टो में थी, उन्होंने तो बस चुरा लिया है. जो भी किया है, she's had the courage to do it and she's done it. This is the second and third. ITI जो होते हैं हमारे देश में, वो सब she has allocated money कि उसका सबका upgradation किया जाएगा. So clearly the focus is on the skill gap that we've been seeing, something that various industry bodies, including NASSCOM, they have been highlighting for some time now. Okay. कोई criticism जो especially opposition या in general as a journalist you see, as personally I have a criticism, and you might blame it on my age these days. That is, she could have done a little bit more for the aged population, insurance specifically. Retirement is a huge conversation in a country like ours. If you're moving towards a developed nation where you do not have social security, it is on the government to ensure that there's some sort of a security net. अगर आप security net नहीं दे पा रहे हैं, then you have to have insurance and insurance tools to protect the vulnerable old people of this country. She's done nothing like that. Also देखिए, हम लोग जो insurance जब खरीदते हैं, आपने देखा होगा हम 18% GST देते हैं इस पे. She has opportunity of doing it outside the budget as well. GST changes can be and are made outside the budget, but she should have perhaps hinted at that. Makes sense. So that's my criticism. Done. On that note, I guess, Mota Modi, we have made a quick summary of the entire budget. Thank you very much, Suchetna, for sharing your wisdom and your analysis of the entire budget. I really hope for all those people who really want to absorb the budget in a very quick format, they can watch this podcast to know more about it. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye. Bye.